अभी तक हमने क्या करा है? फ्रूट्स जनरल डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, व्हाट इज मेंट बाय फ्रूट, व्हाट इज ए ट्रू फ्रूट, व्हाट इज ए फॉल्स फ्रूट, एंड नाउ वी हैव क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट हमने कल लेक्चर में थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। जनरल एक मैंने दिया था ओवरव्यू ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट्स। फ्रूट जो है दे आर डिवाइडेड इनटू थ्री क्लासेस आर ग्रुप्स। एक है सिंपल फ्रूट, दूसरा है एग्रीगेट फ्रूट, एंड तीसरा है कंपोजिट फ्रूट। नाउ कमिंग टू सिंपल फ्रूट, दीज फ्रूट्स जो है सिंपल फ्रूट दे डेवलप फ्रॉम monocarpellary ori or multicarpellary syncarpous ori. Either the ori should be monocarpellary, that is gynoecium में एक ही कार्पल से ये फ्रूट डेवलप होता है, और gynoecium में बहुत सारे कार्पल्स होते हैं एंड ऑल कार्पल्स आर फ्यूज्ड। Then, when all carpels are fused, all the carpels will make a single fruit, and that fruit becomes the simple fruit. यानी जब बहुत सारे कार्पल्स होंगे, all the carpels will be fused, and they will constitute one fruit. So the all gynoecium takes part in single fruit formation. Simple fruits के types है। What are the types of simple fruits? सिंपल फ्रूट्स में एक है फ्लशी फ्रूट, दूसरा है ड्राई फ्रूट। जब हम फ्लशी फ्रूट की बात करते हैं, टॉकिंग अबाउट द फ्लशी फ्रूट, फ्लशी फ्रूट में दीज फ्रूट्स फ्रॉम द नेम इटसेल्फ, फ्लशी मीन्स they have meat, they have flesh, and फ्लश का मतलब आपको पता है ना? फ्लश, व्हाट इज मेंट बाय फ्लश? हेलो, वालेकुम सलाम। फ्लशी फ्रूट, फ्लश का मतलब क्या हो गया? Meat or edible part. एडिबल पार्ट। दीज फ्रूट्स दे डेवलप फ्रॉम सुपीरियर और inferior सिन कार्पस ओरी। यानी ओरी का क्या होना है? सुपीरियर ओरी। सुपीरियर ओरी को हम फ्लोरल फार्मूला में ऐसे दिखाते हैं, ओरी ऑन द टॉप, इंफीरियर ओरी को हम कैपिटल जी, इसको ऊपर वेनिकुलम बार रखते हैं, एंड द ओरी कैन बी सिन कार्पस। सिन कार्पस मीन्स व्हेन ऑल कार्पल्स आर फ्यूज्ड। These may be, the ori may be unilocular or it can be multilocular. By unilocular, you mean when there is only one locule, one chamber in the ori. And when there are so many chambers, then we call this ori as multilocular. These fruits, that is fleshy fruits, they are indehiscent. That is, they do not rupture to release the seeds. ये नहीं फटते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू हैव सो मेनी फ्लशी फ्रूट्स। अब हम आगे जाके देखेंगे व्हाट आर फ्लशी फ्रूट्स, इसमें कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं। अब जो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स इन दीज फ्रूट्स जो है, दैट आकर्स व्हेन द पेरिकार्प इज डिस्ट्रॉयड। पेरिकार्प के डिस्ट्रॉय होने के साथ साथ फ्रूट्स इसमें रिलीज होते हैं। There are other dispersal mechanisms in case of fleshy fruits. For example, fleshy fruits are often attractive. They attract the dispersal agents, and those dispersal agents themselves then disperse the seeds. After eating the fruit, the seeds are usually thrown away. Seeds को बाहर फेंकते हैं, and this way the seeds are dispersed in case of fleshy fruits. Now, fleshy fruits के भी types है। Fleshy fruits में you have so many types, like you have कल हमने पढ़ा भी फ्लशी फ्रूट्स में। आप इसमें एक चैट बनाएंगे, फ्लो चैट बनाएंगे सारे, दैट विल हेल्प यू रिवाइज इट मेनी टाइम्स। फ्लशी फ्रूट्स में हम ड्रूप पढ़ेंगे। ड्रूप हमने कल थोड़ा थोड़ा पढ़ा था, इसको फिर से रिवाइज करेंगे। ड्रूप, इसके बाद है बेरी, बेरी के बाद है बेरी के बाद है पेपो, पोम, एस्पेरिडियम, बैलास्टा, एम्फिसार का, फिर उसके बाद है सिंपल ड्राई फ्रूट्स। पहले हम दिस पार्ट पोर्शन को हम कंप्लीट करेंगे। फ्लशी फ्रूट्स, फ्लशी फ्रूट्स में ड्रूप आता है। ड्रूप क्या होता है?
These fruit is developed from monocarpellary or multicarpellary syncarpus superior ori. यहाँ पे आपको वो टर्मिनोलॉजी रिलेटेड टू गाइनोशियम फिर से रिवाइज होती है। यानी दीज फ्रूट्स, विच फ्रूट्स, दिस ड्रूप, Droop. इट डेवलप्स फ्रॉम मानो और मल्टीकार्पलरी सिनकार्पस सुपीरियर ओरी। देखिए यहाँ पे हमें गाइनोशियम फिर से रिवाइज होती है। आइदर इट डेवलप्स फ्रॉम ए गाइनोशियम हैविंग ओनली वन कार्पल, उसका मतलब हो गया मानो and monocarpellary, or it can develop from multicarpellary। multicarpellary हो गया when there are more than one carpels and the carpels are fused। fused का मतलब हो गया they are syncarpus। so syncarpus and ovary is usually, ovary क्या होती है, superior। superior का मतलब हो गया कि ovary is above all floral parts। यानी gynoecium में जो gynoecium के कार्पल में बेसल swollen part that is the ovary। ovary is above the top and all other floral parts that is stamenas, corolla, androecium, corolla and sepals, they are all below the ovary। Now this in these fruits जो एंडोकार्प होता है, endocarp is hard and stony, so these fruits are also called as stony fruits। इन फ्रूट्स को हम stony fruits भी कहते हैं। अब जिसने आज पहला लेक्चर अटेंड किया, उसने कल का लेक्चर मिस किया हो, तो उसके लिए जो एंडोकार्प है इट इज नॉट ए बिगर डील। एंडोकार्प हमने कल पढ़ा जो फ्रूट आवरी का वाल है, दिस इज द wall of the ovary and since ovary transforms into fruit and ovary के वाल को हम क्या कहते हैं, एज आवरी ट्रांसफॉर्म्स इनटू फ्रूट, आवरी के वाल को हम क्या कहते हैं, पेरिकार्प। क्या कहते हैं, Pericarp. पेरिकार्प इज द होल वॉल ऑफ द फ्रूट और द आवरी। इस पेरिकार्प के लेयर्स है, इस पेरिकार्प में जोन्स है। एक है आउटर जोन, उसको हम क्या कहते हैं, एपिकार्प। Carp. मिडल वन को मीजोकार्प एंड Mesocarp. इनर वन को एंडोकार्प। And endocarp, if you remember you have studied it in the 12th class, वहां पे एक मैंगो बनाई हुई है, मैंगो का एक सेक्शन लिया गया है। मैंगो के वो स्किन को, जिस तरह कल सुमेरा ने बताया, द स्किन ऑफ द मैंगो इज द एपिकार्प। और मैंगो में यूजुअली एपिकार्प इज नॉट ईटन एंड आफ्टर एपिकार्प देयर इज द मिडल portion that is the fleshy, that fleshy portion becomes the mesocarp, that is the mesocarp, and inside this mesocarp there is the stone, stone hard substance یتھ تُہۍ ٲنٹ چھِو وَنان کٲشِر پٲٹھۍ and that is the endocarp। so in the mango we have clear demarcation of epicarp, mesocarp and endocarp। ये जो ड्रूप है इसमें एंडोकार्प इज स्टोनी, ये हार्ड स्टोनी होता है। सो दीज फ्रूट्स आर आल्सो कॉल्ड स्टोनी फ्रूट्स। इसमें वी हैव मैंगो, वी हैव कोकोनट, आलमंड, पीच, वॉलनट, प्लम। And in this endocarp, that is innermost zone of this fruit, there are brachysclerids. This is a type of sclerenchyma base which makes this endocarp hard stone substance. In mango, the edible fleshy part is the mesocarp that you eat and like, and the part where seed is protected is the endocarp। वो जो इसका फेंक देते हैं यस तो अम्बी हंस ٲंٹ त्राइछ छु țھنان। इन बर एपिकार्प एंड मीजोकार्प आर बोथ एडिबल। बर में दोनों एडिबल होते हैं। दिस इज ए काइंड ऑफ फ्रूट। द रिंड ऑफ एलमंड, रिंड कल सुमेरा ने कहा था व्हाट इज रिंड एंड वॉलनट, दे आर एंडोकार्प। Epicarp, also called rind. क्या किसको कहते हैं रिंड, Epicarp, also called as rind. एपिकार्प यानी आउटर लेयर ऑफ Outer. आलमंड एंड वॉलनट आर एंड वॉलनट आर एंडोकार्प एंड देयर एडिबल पार्ट इज सीड। इनमें एडिबल पार्ट जो होता है दैट इज द सीड। आप एक आलमंड को तोड़ के उसका अंदर वाला सीड खाते हैं। इन कोकोनट एपिकार्प इज हार्ड एंड थिन while mesocarp is thick and consists of hard fibers। कोकोनट में एंडोकार्प इज हार्ड
एंड द सीड इज प्रोटेक्टेड इन इट। कल हमने कोकोनट पे बहुत लंबी बात की थी कि कोकोनट में जो फ्लश होता है दैट इज द एंडोस्पर्म, सेल्यूलर एंडोस्पर्म, और उसमें अंदर जो वो लिक्विड होता है, liquid that is in maturing, न्यूक्लियर that is nuclear endosperm, and that also undergoes cellularization to make the whole endosperm as the cellular endosperm. एंडोस्पर्म पर बात करेंगे आगे। अब हमारे पास है नाउ वी हैव अनदर फ्लशी फ्रूट विच इज द बेरी। बेरी में क्या है? दीज फ्रूट्स, ये जो बेरी है, दे डेवलप फ्रॉम, वी आर टेक्निकली स्टडीइंग फ्रूट्स, दैट इज बॉटनिकली। berries, these fruits they develop from again monocarpellary, यानी कार्पल एक होती है, और carpels can be many, and carpels are fused, and this kind of fusion where the carpels are fused we call this as syncarpus gynoecium, yani syncarpus auri. And when many carpels have fused there can be many chambers in the auri. Ori can be again here inferior or superior. The question may be asked कि पेपो किस auri से develop होता है? We can have both types of epigynous or hypogynous. Epigynous means when everything is abogynous, that is gynoecium is inferior. Hypogynous means when everything is below gynous, that is gynoecium is inferior. And in this placentation जो है, you know, placentation is the pattern of arrangement of alveolus in the ovary. It is axial and it is parietal. कल हमने एक्सैल और पैरेटल हमने प्लेसेंटेशन पढ़ी भी है इन द प्रीवियस लेक्चर्स। एक्सैल में जब अवरी में एक सेंट्रल एक्सिस होती है दैट इज द परमानेंट ऑन, एंड दैट एक्सिस द ओव्यूल्स आर बार्न, दैट टाइप ऑफ this placentation is called axial placentation. And when the ovules are born on the rind or the wall of the ovary, that placentation is called a parietal placentation. So moving onwards, इसमें जो इन दीज फ्रूट्स एपिकार्प इसमें, यानी आउटर लेयर दैट इज थिन एंड सीड्स आर एम्बेडेड इन फ्लशी पार्ट। सीड्स इसमें यूनिफॉर्मली एम्बेडेड होते हैं मोस्टली इन द फ्लशी पार्ट ऑफ द फ्रूट। इनिशियली सीड जो होते हैं दे आर अटैच्ड विद द प्लेसेंटा ऑफ द फ्रूट, बट later on after maturation the seeds get detached and from the placenta and spread uniformly in the fleshy part of the fruit. You have several examples of berry. For example, the fruits, berry fruits like which develop from the superior ori. They are tomato, they are grapes, and they are the brinjal. You recollect the shape of tomato and cut it and see how the seeds in the tomato are dispersed throughout the fleshy part. उस टमाटो में आपको चैम्बर्स भी दिखते हैं, बट द चैम्बर्स है डिजॉल्व्ड इनर, अंदर से वो डिजॉल्व हुए होते हैं, एंड दिस मीन्स दैट द टमाटो हैज डेवलप्ड फ्रॉम मल्टी कार्पलरी आवरी। इसी तरह ग्रेप्स में भी, और ब्रिंजल, ब्रिंजल यू नो। एंड प्लांट्स विथ इंफीरियर ओरी, दैट इज बेरी में कुछ फ्रूट्स वो होते हैं दैट डेवलप फ्रॉम इंफीरियर ओरी। इंफीरियर ओरी इज अगेन द ओरी विच इज बिलो ऑल फ्लोरल पार्ट्स, यानी इसके ऊपर होते हैं सेपल्स, पेटल्स, एंड एंड्रोशियम, गाइनोशियम occupies the lower position. इसमें गावा आता है, banana आता है। You eat the guava and see how the seeds are dispersed throughout the guava. Now we have date palm. Date palm, you know, it is the famous fruit and we prefer it. It is highly nutritious and it is one-seeded berry. You will remember it and you will remember it for your whole life कि date palm एक berry है। In it जो pericarp है, pericarp, what is pericarp? Anybody? Pericarp. फ्रूट फ्रूट वॉल। वॉल। फ्रूट वॉल। इट इज डिवाइडेड इनटू एपिकार्प, मीजोकार्प एंड एंडोकार्प। आप एक खजूर को ले लो एंड खजूर को आप देखो, काटो, उसका बाहर वाला जो स्किन होता है दैट इज एपिकार्प। मीजोकार्प इसका फ्लश होता है। एंडोकार्प जो इसमें वो क्या होती है अंदर वाली, क्या बनन, आंट, उसको क्या कहती है? कर्ट। क्या हाँ, आंट कर्ट? यस तंद्री आसन, दैट इज द एंडोकार्प। आंच क्या बनन उर्दू पे, क्या बने? एपिकार्प इसमें थिन होता है, सॉफ्ट होता है,
जबकि mesocarp is thick and fleshy. Endocarp is thin like a membrane. This is attached with the seed. एंडोकार्प इसमें एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होता है। आप एक खजूर को ले लो, उसको काटो, उसके उस सीड पर एक थिन ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है। सुशासन पॉलिथीन की जगह ट्रांसपेरेंट पॉलिथीन आपने देखा है किसी ने? यस सर, वाइट कलर। वाइट का वाइट नहीं, वो ट्रांसपेरेंट होता है। मोमजामिक पे सो थिन लेयर आज ने वो कंस क्या वन उर्दू पे। एंड दैट एंडोकार्प इज अटैच्ड विद द सीड कंस पता। एरिका नट, एरिका नट किसी को है इसका कंस पता है कशुर? एरिका नट काजू छुआ खियोमुत? यस। एरिका नट इज अगेन, आप फिर से रिप्लाई नहीं करते, शायद आप थक गए, आप थक गए, रिप्लाई नहीं करना है। व्हाट इज एरिका नट? It is काजू। kaju. It is one-seeded fibrous fruit. When it is thick fibrous layer is removed, then seed comes out, which is hard. You Google it Erica nut, आप Google कीजिए देखिए क्या है। इसके बाद क्लास के बाद now we have पेपू। पेपू कौन सा फ्रूट है? वन थिंग इज क्लियर कि हम ऊपर पढ़ रहे हैं फ्लशी फ्रूट, सो पेपर इज ए टाइप ऑफ फ्लशी फ्रूट। fleshy fruit. What is now pepo? It is these fruit is developed from tricarpellary, syncarpus inferiori. The conditions are here more specific. यानी जो ओरी जिससे पेपो बनता है इसमें 3 कार्पल्स होते हैं। कितने कार्पल्स? 3 कार्पल। एंड ऑल कार्पल्स आर फ्यूज्ड। एंड द ओरी फ्यूज्ड। क्या है? ओरी इज इंफीरियर। ओरी कैसे इंफीरियर है? जो अवरी है यानी कार्पल का लवर पार्ट, बेसल स्वोलन पार्ट, इट इज बिलो ऑल फ्लोरल पार्ट्स। इसके ऊपर है सेपल्स, सेपल्स के बाद वाला, सेपल्स के बाद वाला वर्ल जो है दैट इज पेटल, एंड उसके बाद वाला है स्टेमन। जो कार्पल में जो बेसल swollen part ovary that is below all the other parts of the flower, so it becomes the inferior ovary. This fruit is again unilocular. अब यहाँ पे सवाल पैदा होता है how the fruit has become unilocular. क्या हुआ होगा अगर इसमें 3 कार्पल्स है? 3 कार्पल्स मतलब हो गए, 3 कार्पल्स मतलब हो गए कि ओवरी में कितने चैम्बर्स होने चाहिए? 3 चैम्बर्स। 3। बट आवर मीटिंग विल एंड इन 10 मिनट्स, आप यू विल ज्वाइन अगेन, लेकिन 5 मिनट का वेट करेंगे आप, ठीक है? यस सर। हाँ, इसी लिंक पे आप ज्वाइन करेंगे। द फ्रूट इज यूनिलाक्यूलर। अब यूनिलाक्यूलर फ्रूट कैसे बना है? यूनिलाक्यूलर फ्रूट जो अंदर सेप्टम है, सेप्टा दे हैव डिजॉल्व्ड। ये वाला सेप्टा, ये वाला एट जो मेच्योरिटी। पार्टीशन है, दो दोज गेट डिजॉल्व्ड एंड द fruit becomes unilocular. That is in overall in the fruit there is only one chamber. आया समझ? यस सर। अब these fruits, ये जो पेपो है, they are fleshy and they are spongy. So they look like sponge, they are soft. You know sponges, we study in zoology one phyla जिनको हम क्या कहते हैं? पॉरिफेरल। Porifera, exactly. Sometime fruits are bitter in taste. In fruits का टेस्ट bitter होता है due to presence of due to presence of tetracyclic ट्राइटीपाइन in fleshy pulp. इसका जो पल्प होता है वो फ्लशी होता है। फ्रूट्स इसमें यूजुअली जो आते हैं क्यूकरबिटेसी फैमिली, क्यूकरबिटेसी फैमिली में जो फ्रूट्स आते हैं दे आर इन
this Pepo category. Now we have poem. Coming to the poem, स्क्रीन है? Yes, sir. Yes, sir. स्क्रीन है, पता नहीं क्या। 1 मिनट, स्क्रीन है आपके सामने? जी सर। अच्छा। यस सर। पोम अब क्यूकरबिटेसी फैमिली जानी हो ना, तो क्यूकरबिटेसी फैमिली सी इट। वुशो तो क्यूकरबिटेसी फैमिली दिख रहा है? Yes, sir. अलर्ड, Yes, sir. अलर्ड, these fruits come under, they are called पेपो। आप इन पेपो को फिर से पढ़िए और देखिए कि हम क्या पढ़ रहे थे। खरबूज, हैंडवन, मस्क मिलन, watermelon, these are cucurbitaceae, and they have, this fruit is called a pepo fruit. Now we have pome. ये जो this pome fruit है, it develops from bi or multicarpellary syncarpus inferior ori। इसमें या दो कार्पल्स होते हैं या मल्टीकार्पलरी, बहुत सारे कार्पल्स होते हैं। एंड द कार्पल्स आर फ्यूज्ड अगेन द ओरी इज inferior। इंफीरियर ओरी, यू नो इट नाउ। इंफीरियर ओरी क्या ओरी होती है? इसमें अब क्या होता है, द रिंड एंड द फ्लशी पल्प आर मेड अप ऑफ थैलेमस। हियर इन पेपो कौन सा पार्ट फ्रूट बनाने में रोल अदा करता है? इट इज थैलेमस। इट इज थैलेमस। एंड द मेन पार्ट ऑफ द ओरी इज हार्ड एंड ड्राई एंड रिमेन्स इनसाइड द फ्रूट। जो यहाँ पर मेन पार्ट ऑफ द ओरी है, दैट gets inside the fruit and that is hard and dry and remains inside the fruit. Seeds are then present in it. For example, if you take the section of apple, जब आप एप्पल खाते हैं, एप्पलस अंदर किन आसान सो ह्यूड़ युस तै त्राय छु छनन, तथ हिडिस अंदर किन छ आसान तिम सीड्स। सो एप्पल का जो फ्लशी पार्ट आप खाते हैं, दैट इज नॉट द आउरी, दैट इज, व्हाट इज दैट? एप्पल में फ्लशी, Thalamus. हाँ, एप्पल में जो फ्लशी पार्ट होता है, दैट इज द थैलेमस। And what is thalamus? Uh, Thalamus is flattened pedicel, जिसपे it is part of the Plate stalk of the form to flower, other जिसपे purpose. floral part is insert होते हैं। So in apple, now is apple a true fruit? No, it is not a true fruit. No, It sir. is an apple. True Apple fruit. is a false fruit because apple में जो main fleshy part होता है, जिसके लिए fruits खाए जाते हैं, that is, what is that? That is the thalamus। and the ovary जो है, the ovary has got, you see here, आप यहाँ पे देख सकते हैं, you see here, यहाँ पे आप 1 मिनट देखिए। ये this is apple, and in apple you have this inner part, जिसमें सीड्स होते हैं, that is the actual ovary। लेकिन इसमें जो बाहर वाला फ्लशी पार्ट होता है, that is thalamus। एंड एप्पल के अंदर ट्रू फ्रूट है एंड बाहर इसके साथ थैलेमस है। सो एप्पल एज ए होल इज नॉट ए ट्रू फ्रूट। यहाँ पे Seed इट इज, occur. हाँ, इट इज द एलएस ऑफ दिस, एलएस ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ एप्पल। इसी तरह हम लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ टोमेटो लेंगे। टोमेटो का लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन देखिए, टोमेटो में क्या क्या है। टोमेटो में अंदर वाला जो है,
इसमें एक्सेल प्लेसेंटेशन दिखती है। टमाटो का बाहर वाला लेयर इट इज द प्लेसेंटा। टमाटो के बाहर वाले लेयर को एपिकार्प कहते हैं। एपिकार्प टमाटरुक डेल युस आसान स्किन एपिकार्प। एपिकार्प के बाद जो इसमें एडिबल फ्लश होता है दैट इज द मीजोकार्प। एंड इसके अंदर एंडोकार्प है। एंड द सीड्स दे आर they are attached in a manner which is called axial placentation axis के साथ central axis के साथ but that axis then later on degenerates and seeds appear as they are dispersed in the mesocarp yum seeds छ basan sari chakrit of the mesocarp. This is the transverse section of this what you call a cucurbitaceae family. इसमें क्या है देखो mesocarp plus endocarp it is edible and seeds अंदर होते हैं. So it is a this cucumber is a case of what kind of fruit? It is papo. Now we have another type of fruit. This type of fruit is आप जरा पढ़िए ये Hesperidium. Hesperidium. What is Hesperidium? This fruit develops from multicarpellary syncarpus superiori. This is important. कहाँ से ये डेवलप होता है? मल्टीकार्पली सिनकार्पस सुपीरियर ओवरी। हाँ ये आप अब सारे जानते हैं मल्टी कार्पलरी हो गए मिनी कार्पल्स फ्यूज्ड कार्पल्स एंड द ओरी इज एट द टॉप all other flower parts are below the ori. This fruit is specially found in plants of Rutaceae family. For example इसमें आएगा orange इसमें आएगा lemon इसमें आएगा citrus fruits. So Hesperidium you look at the orange अगर तो घर छू वुनकस orange आप ऑरेंज को खोलो और ऑरेंज में देखो कि क्या क्या है एंड दैट ऑरेंज यू कम्स अंडर द कैटेगरी आज हेस्पेरिडियम. इसमें क्या है एपिकार्प ऑफ दीज फ्रूट्स इट इज मेड अप ऑफ थिक रिंड विच इज लेदरी एंड many oil glands are present in it. इस पे संग तरुक राश अछन छकन उसमें वो इसके एपिकार्प में होता है. नाउ mesocarp is white fibrous structure which is attached with the epicarp. mesocarp जब आप अगर आप एक ऑरेंज का छिलका उठाते हैं उसके साथ वो फिदरी लेयर होता है उसके वो स्किन के साथ एपिकार्प के साथ दैट इज mesocarp which is fibrous structure and membranous endocarp projects inward and it forms many chambers. इसमें जो एंडोकार्प होता है दैट इज membranous and it forms many chambers. Many glandular hairs are present on inner side of the endocarp. These glandular hairs are edible parts. इसमें जो glandular hairs होते हैं they are edible parts. We will look it in the Google of less than 1 minute. Next meeting में हम करेंगे Hesperidium. अब बेलास्टा. बेलास्टा क्या है? इट इज ए मल्टीलाइकुलर मल्टीसाइडेड फ्रूट. इसमें बहुत सारे साइड्स होते हैं और ये इट हैज कम फ्रॉम द